It has been started, I guess. Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. So I was telling you that the domain of stylistics, the horizon of stylistics is very vast. We can capture, we can read, we can study the unique features of any kind of text that we find in the form of um, written documents or written material, or it can be spoken. And as I told you, that semiotics is also the part of the analysis of stylistics study. But what actually is stylistics? There are so many definitions. We can describe it in many ways. But to keep it simple, it is basically an objective and scientific, you can say, approach to study the text that will just focus what actually is written or what actually is the constituents of that specific text or that specific uh, material you are analyzing. And from layout to linguistic items, each and everything is important. As one of you was mentioning yesterday about newspapers, that in newspapers we do find a different kind of structure. And then I asked you particularly, either you are talking about the layout, about the format, about the structure, about the design, about the texture, or about the impression that you are getting out of that story. And the answer you gave me was about the format, structure, like these kind of things. So stylistics not only find out the structure or explore the structure of any text, but it does also see what is the impact of that particular structure. Means we can convey our messages in any way, but why we are being limited in the categorization of formality and informality, colloquialism, and so there are certain things that are important from stylistics point of view to explore. And I was telling you earlier that it was the genre of poetry that first ever was the subject of study in stylistics. And in that, they found that every poem and every poet has its own unique features. And those features are not, you can say, uh, they cannot be seen in the work of others, and this is what make them different. And there are certain common features on the basis of which we find a kind of pattern or practice in different ages. Like if we talk about romanticism, the features that we find in the poetry of any romantic poet, we can't trace them in the work of the ones who were not from the romantic era. ऐसे ही है ना, what we find in Wordsworth poetry obviously can be traced in the work of Keats, can be traced in the work of Blake, can be traced in the work of Coleridge or Percy Shelley. The thing is that they are all representing one age, that is romantic era. And when we will try to compare what we found in common in their piece of poetry, we can't see in the poetry or the poetic work of the ones who are not from that age. If we talk about age of reason, if we talk about 18th or 17th century, it was a kind of uh, era where classic or classicism was renewed or revived. So they were not ideally happy with the free limits of the poets or the writers who were just saying that whatever they are writing
is their subjectivity or subjective approach. Means they were challenging that free freedom on the part of the writers. So what we find in their poetry is quite different from romantic era's writers. So what I mean to say, as it started with the exploration of poetic work, and on the basis of certain features we find or we categorize different ages. But keep in mind, it is not the subjective approach that defines stylistic poetry. It is the objective approach that defines stylistic poetry. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। All right, class, there was an interruption. Am I audible now? यस मैम। Yes, Okay, ma'am. so, all right. So I was telling you that it is basically the study of language that they explored and studied, and then they found how common features are distinguishes the writers and the poets from one age to another age. I don't know if you have read criticism course earlier or not. Was No, there ma'am. any course, history of English literature, Yes, ma'am. History of English literature पढ़ा था हमने. and दो you से. read about different movements or different Yes, ma'am. literary movements? Yes, ma'am. Can you name any of them? मूव आर्ट्स की भी थी. इस- इतना याद है मुझे आर्ट्स की हमने कुछ पढ़ा था. एस्थेटिक मूवमेंट थी एंड ह्यूमैनिटी पढ़ी थी All right. एंड Okay. Don't you have any idea about formalism, structuralism, नहीं मैम, practical सिंबलिज्म पढ़ा था हमने. criticism? Okay, so there is always a question that why was there need of stylistics? Means there is still a debate going on uh, that stylistics is an independent discipline, or it should be uh, the subdiscipline of applied linguistics or linguistics. So this debate is still going on. As you know that in literature normally there is one sentence that you have heard many times even by the teachers who are teaching you the course of literature, that whatever you write, it is not wrong. आपने कभी ये सेंटेंस सुना है किसी से कि whatever interpretation you give in literature, it can never be wrong. Yes, ma'am. This is the Always. common, yeah, this is the common stance or point of criticism when there were two, you can say, binaries. One was scientific and other was
a kind of non-scientific. And if you have read the course of RM, research methodology पढ़ी है आपने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वहाँ you can see वहाँ पे भी two school of thoughts हैं. One is based on experimental, or you can say practical kind of approach towards result, where they form hypotheses and then they prove them, and then on certain authentic calculations they declare the results, and whatever they declare can be tested and analyzed in any part of the world, and there wouldn't be any two opinions about it. Like if we have H2O, it is everywhere. There isn't any assumption that in East it would be different and in West it would be different. So that kind of school of thought is obviously that is involving the sciences or the natural sciences, and they do have a very clear cut reasons of their findings, and they can justify it appropriately. But there are other school of thoughts that do not have that kind of authenticity, that kind of practical exposure or experimentation, and they do involve human beings and objects in their research, and on the basis of, you can say, what they found in majority of the people, they just forward their findings of the research, and this is always criticized. And do you have any idea of these two school of thoughts? Yes, ma'am. पढ़े हुए हैं School of Thoughts. Can you name them? इनके तो दो मुझे नाम probably लिए याद है मैंने. मैम, हमने साइकोलॉजी में पढ़े थे. Okay, what were they? मैम उसमें बिहेवियरिज्म था, साइकोएनालिसिस थे, एंड वो था कॉग्निशन भी कुछ करके था, और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच भी थी स्कूल ऑफ थॉट्स में, जो हमने साइकोलॉजी में पढ़े थे. स्ट्रक्चरलिज्म भी था, फंक्शनलिज्म भी था. हाँ, फंक्शनलिज्म भी था, स्ट्रक्चरलिज्म भी था, और यस, यही थे. साइकोलॉजी भी. ओके, और कुछ? नहीं मैम, बस साइकोलॉजी में तो यही वाले पढ़े थे. नहीं, मैं रिसर्च की बात कर रही हूँ ना. रिसर्च में हमने ये तो पढ़ा था ना, फंक्शनलिज्म वगैरह शायद. फंक्शनलिज्म. हम रिसर्च में हमने कब पढ़े थे स्कूल ऑफ थॉट्स? तो हमने साइकोलॉजी में पढ़े थे. रिसर्च में तो हम यस लोग मैम. बस दो ही चीजें पढ़ रहे थे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, अगेन एंड अगेन, बस यही दो टर्म्स पढ़ी थी. एंड इसके अलावा हमने वो जो प्रोजेक्ट जो मतलब असाइनमेंट बनाई थी वही बनाई थी. स्कूल ऑफ थॉट्स तो हमने साइकोलॉजी में पढ़े थे. यस मैम, जस्ट वो हमें याद, क्योंकि हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी ऑनलाइन पढ़ी थी, इसलिए हमें ऐसा सच उसका कुछ भी याद नहीं. किसने पढ़ाई थी? मैम उन्होंने. मेरी सादिया ने. यस मैम. यार नहीं, मिस सादिया ने तो नहीं पढ़ाया आपको? नहीं, नवाल कोई आर्ट से था शायद, उनका नाम पता नहीं, मुझे तो नाम भी भूल गए. नहीं मैम, मैम सादिया ही थी. नहीं, उन्होंने हमें साइकोलिंग्विस्टिक्स पढ़ाया था. अच्छा अच्छा, हाँ. चले, कोई बात नहीं, डिग्री फिर भी मिल जाएगी आपको. मैम आप ऐसे डिफरेंस चेक कर ले, हमने साइकोलॉजी सेकंड सेमेस्टर में पढ़ी थी ऑनलाइन, कि शायद फर्स्ट में पढ़ी थी, पर उसका हमें अभी तक याद है. ऑनलाइन और ऑन कैंपस में आप डिफरेंस चेक कर लें कि हमने वो हमें मैम नताशा ने पढ़ाई थी फर्स्ट सेमेस्टर हाँ में. हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी और अभी तक हमें याद है. लेकिन हमें रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं याद, जो हमने फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा, कि फिफ्थ में.
चलें, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका जो है ना। यस मैम। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर 1 में क्या पढ़ा था, में क्या पढ़ा था? 1 में तो हमने वो राइटर्स के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा, मतलब वो सब। 2 में मेन क्रिटिसिज्म था, उसमें हमने उसको पढ़ा था। डॉन डान कौन था पढ़ा? 2 मेन राइटर्स पढ़े थे हमने हिस्ट्री 2 में। वो मैम नायला से पढ़ा था हमने। फेमिनिज्म वगैरह और ये सारा कुछ पढ़ा था। मैम हमने बहुत ज्यादा ना हिस्ट्री 1 में काफी ज्यादा चीजें मैम ने हमें कवर करवा दी थी। मैम ने, क्योंकि हमें जब हिस्ट्री 2 पढ़ा रही थी तो उन्होंने कहा था ये आपने ऑलमोस्ट सब पढ़ा हुआ है, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि हिस्ट्री 2 भी होगी। तो मैम ने वही चीजें ऑलमोस्ट पढ़ाई थी, लेकिन उन सबको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दिया था, क्योंकि हमारा हाँ, हिस्ट्री बस बहुत ज्यादा था और मैम ने हमें हर चीज पढ़ाई थी। मैम ने कहा था कि आप इसका पेपर दें, याद करें या ना करें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो आपके पास, तो जो पढ़ने वाले हैं उनका उसमें फायदा तो हमने ज्यादा हो पोइट्स के जाएगा। बारे में ही मोस्टली पढ़ा था ना, डिकन्स था और ये सारे थे। 2 में उसमें हमें मैम ने हमें पढ़ाया था, जब हमने हिस्ट्री 1 पढ़ी थी तो हमने स्टार्टिंग से शुरू किया था 14th सेंचुरी में, जब चौसर की एज थी, जब हमें पता हाँ, था कि इंग्लिश कैंटरबरी पढ़ा था और हमने, इन कैंटरबरी। हमने वो सारे मेजर जो भी एजेस थी वो पढ़ी थी, और उसमें कौन सी चीज ज्यादा डोमिनेंट है, जैसे कि 14 to 15 में ड्रामा ज्यादा डोमिनेंट था, आगे जाके नॉवल, फिर पोइट्री। तो वो मैम ने हमें बताया था, और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट उस टाइम पे जो थे राइटर थे फेमिनिज्म उन पढ़ा था, फेमिनिज्म मूवमेंट पढ़ी थी, ह्यूमनिज्म ह्यूमैनिटी पढ़ी थी, ये सारी मूवमेंट्स पढ़ी थी जो मैम पूछ रही है, सिंबलिज्म वगैरह। ओके। और उस टाइम पे एटमॉस्फेयर था, मतलब लोग कैसे रहते थे यहाँ, लाइफस्टाइल लोगों का, वो चीजें, और फिर वर्क्स, और फिर उनके इम्पोर्टेंट जो राइटर्स, जो पॉइंटर्स जो भी थे, वो सब। अच्छा, इस सेमेस्टर में आपका एक कोर्स है लिटरेरी मूवमेंट्स का, ठीक है? एंड आई डू होप कि आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स, स्पेशली इफ यू आर सीकिंग any opportunity in government jobs, PPSC jobs, or even for the university lecturers. You will be asked about a particular questions that especially that course would be covering. आप पीपीएससी के टेस्ट देने जाते हो या कहीं भी लैंग्वेज या लिटरेचर से ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं, दे डू इन्वॉल्व ऑल दीज थिंग्स। उसमें ओबियसली आप रशियन फॉर्मलिज्म के बारे में भी पढ़ोगे, फिर स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में भी पढ़ोगे, और उस सारी मूवमेंट से होते होते फिर आप जो मॉडर्न मूवमेंट्स हैं जिसमें ये आपकी जो इमेजिज्म है, या ये हमने अभी ट्रांसलेशन स्टडीज में भी कुछ चीज़ें देखी थी, मैम कौन ले रही है उसमें आप सब्जेक्ट, लोग, सर आशिफ? हाँ जी, वही पढ़ाएंगे आपको। ओके, फिर ठीक है। तो उसमें आप लोगों ने अपने फायदे के लिए जो है ना वो इसको देखना है। बहुत सारी चीज़ें आपकी जो हैं, जो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको जस्ट एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दूंगी कि स्टाइलिस्टिक्स जो है वो ओबियसली एक डिसिप्लिन के तौर पे एक रिकॉग्निशन इस सब्जेक्ट की जो हुई थी वो लेट 20th सेंचुरी में हुई थी, जैसे हमने ट्रांसलेशन स्टडीज का पढ़ा था। बट समहाउ और अदर वी कैन हैव इट्स रूट्स in olden times. And when we say that what is literature and how literature should be studied, and you see what I named formalism, structuralism, these are basically movements and approaches to read or to study or to analyze in depth literary टेक्स्ट और लिटरेरी जॉनरास, ठीक है? तो ये ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोगों के लिए बिल्कुल नई होगी। ये इट इज़ अ काइंड ऑफ, यू कैन से, if you talk about linguistics, you will see linguistics here. If you talk about literature, you will see literature here. And there would be certain things that you will be analyzing from a stylistics perspective, but they will be literary documents, like they will be the pieces of poetry, they will be dramas, and they will be
and fiction as well. But if we talk about different representation of text, like we can have newspapers, we can have pamphlets, we can have any kind of semiotics that can be analyzed from stylistics point of view. Stylistics basically deals with the study of scientific study of लैंग्वेज एंड व्हेन वी से लैंग्वेज तो लैंग्वेज आपको पता है वो फॉर्मल भी होती है इनफॉर्मल भी होती है लिटरेरी भी होती है और स्कॉलरली भी होती है लाइक एकेडमिक राइटिंग भी इसमें आ जाती है नॉन एकेडमिक भी आ जाती है ऑरल भी आ जाती है रिटन भी आ जाती है स्पोकन भी आ जाती है क्लोकियल जो है एक्सप्रेशंस वो भी आ जाते हैं मतलब लैंग्वेज तो हमें कहीं भी मिल सकती है ना एंड स्टाइलिस्टिक्स डज डील विद द लैंग्वेज और जब हम इस चीज़ को जहन में फोकस करेंगे इस चीज़ का तो फिर यू विल सी हाउ इट विल वर्क इन द स्टडी ऑफ दिस कोर्स आई डोंट नो what are your expert you means everyone can better analyze in which area he or she is excellent or in which area he or she is less excellent आप लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट किस तरफ है लिटरेचर की तरफ है या लिंग्विस्टिक्स की तरफ है लिटरेचर Literature, I guess. ओके और लिटरेचर में भी वी डू हैव मैनी genres means there is poetry there is novel there is drama there is short story and every text is different like we can't say कि हर टेक्स्ट जो है वो सेम है ऐसे ही है Yes, ma'am. यस तो मैम आप लोगों का इंटरेस्ट किस साइड पे है सबका डिफरेंट है मेरा लिटरेचर में नॉवल की तरफ है ओके व्हाट Yes, अबाउट ma'am. अदर्स Literature, novels, prose, short stories, something like that. राइट ये सिर्फ दो लोग ही हैं इस क्लास में दानिया और नवाल या फिर क्या बोलती है अच्छा चलें इट्स गुड बट कीप इन माइंड कि जो स्टाइलिस्टिक्स है हिस्टोरिकली व्हेन वी टॉक अबाउट फॉर्मलिज्म we can have its roots there but you must have the idea what actually is formalism I don't believe in this thing that you are now in 8th semester and you do not have any idea about formalism or should I believe in it यस मैम हमने फॉर्मलिज्म के बारे में अभी तक तो एज सच नहीं पढ़ा मतलब जिन जिन टर्म्स के बारे में पढ़ा है वो हमने आपको बताया है Yes, ma'am. Formalism नहीं पढ़ा. okay मैम मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि फॉर्मलिज्म ये है कि हम लोग जब किसी फॉर्मल टेक्स्ट की बात करते हैं या फिर किसी एकेडमिक साइट पे जाते हैं तो इन सबको फॉर्मलिज्म जबकि दूसरा जो हम लोग कह लें कि हमारी डेली टॉक होती हैं वो हमारी नॉन फॉर्मलिज्म में आ जाती हैं all right any other opinion यस मैम जो रबिया ने बताया मतलब हम कह सकते हैं कि जब हम किसी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ के बारे में या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ को डिस्कस करें तो उसको हम फॉर्मलिज्म साइड पे ले जाते हैं जैसे हमें कहा जाता है कि क्लास में वी कैन नॉट डिस्कस अबाउट पॉलिटिक्स एंड ऑल तो क्योंकि हमें पता है कि वो एक सेंसिटिव सा टॉपिक है या एक वो किसी एक
मतलब स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर या सेटिंग के अंदर हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह पॉलिटिक्स के अलावा जब जैसे हम बात करते हैं, क्या कहते हैं, जैसे हमें मतलब सारे लिटरेचर में हमें जब 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 पढ़ा तो हमें यही कहा गया कि वी कैन नॉट डिस्कस रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। तो ये थोड़ा फॉर्मल में चला जाता है फिर शायद। Okay, now listen me carefully. Yes, Basically, ma'am. formalism is a school of literary criticism, or you can say it is a kind of literary theory that was in the domain of literature. As I was telling you that you have heard it many times, whatever you write in literature or however is the way of your interpretation cannot be wrong. And due to this, it was always criticized that as it is a subjective approach, if I conclude that the meaning of this verse is this, you cannot challenge me, right? So, this kind of debate was going on in the domain of literature as well, and it was said that literature there isn't any use of this kind of knowledge where we do not agree on one point. So on the basis of these kinds of objections or allegations, there were these movements that started in literature, and the first ever was formalism. What formalism says and what kind of theory it is, as it was a criticism, and for the answer of these objections and criticism, this theory was launched or started. So the pioneer of this theory was saying that whenever we read a literary text, its structure or what is written in that text is more important in comparison of considering or deriving the meaning by knowing about who was the author and in what backdrop he has written that story and what kind of people he was addressing while writing that specific text. So, what was their focus? That whatever is the structure of that text, whatever is the linguistic expression on that text, that is the point of focus. When we will just read the text and we will read it between the lines, we can have its accurate and objective interpretation. You getting me what I mean to say? मतलब अगर मैं आपको पहले ही बता दूं कि जी आज हमने ये वाली पोइम पढ़नी है, इसका राइटर और पोइट ये था और उसने जो थी वो इस कॉन्टेक्स्ट में इस पोइम को लिखा है, आई विल मेक अप योर माइंड, आई विल गिव यू अ डायरेक्शन एंड यू विल जस्ट थिंक अबाउट दैट टेक्स्ट इन दैट वे. ऐसे ही है. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. So, formalism or formalist school came with this idea that whenever we are given a text to analyze or critically find out its feature or its themes, we should not consider or we should not before time read about who is the author and what kind of background keeping in view who has written that text or produced that text. When we will be just objectively and scientifically or analytically try to understand what actually those words are conveying us, we can have a sound interpretation, and that meaning and interpretation can further be analyzed for scientific inquiry. Is it clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. So this was formalism. This was formalist school of thought, where the textual features of the text were focused. And why I said that we can have the history of stylistics or we can trace it for formalism, the reason is that
in stylistics, this approach was basically this area of study was basically to pacify the criticism on literature, and it was initiated to read the texts of literature scientifically and objectively. The main focus in stylistics is textual meaning or textual interpretation of the language or the structure in which the text is produced. अभी तो हम theoretical knowledge पे हैं ना, then I will tell you कि how we do not try to find out कि वर्ड्सवर्थ ने अगर ये पोइम लिखी है तो उसने किस बैकड्रॉप में लिखी है, वो सारी चीज़ें हम बाद में लेके जाते हैं, वो सारी चीज़ें बाद में आती हैं, सिर्फ लैंग्वेज का जो फोकस है ना वो सबसे पहले आता है. If it is giving us a very clear meaning, okay. If it is giving us double meaning, okay. If it is giving us some symbolic meanings, okay. Means we try to find as much features or as much things as possible while doing stylistic analysis. ये कोई वो आप कह लें कि स्टीरियोटिपिकल अप्रोच नहीं होती, मतलब हम पहले से अपना माइंड मेकअप करके उस चीज़ को नहीं एनालाइज करते. आप लोगों ने वो एक बहुत फेमस सीरियल रहा है हम सफ़र, देखा हुआ है? Yes, ma'am. ओके, अगर नहीं भी देखा, यू माइट हैव हर्ड इट्स थीम सॉन्ग. यस मैम. Yes, ma'am. यस ठीक है, मैम. वो थीम सॉन्ग अगर हम उसको देखें, उसके हिस्टोरिकल रेफरेंस को, तो वो लिखा गया था स्कूते ढाका के मौके पे. नाउ यू कैन इमेजिन, हमने अपनी कह लें कि अवेयरनेस में उसको एक ड्रामा देखा है और उस ड्रामे में कुछ इस तरह की स्टोरी थी और उस स्टोरी को वो रिफ्लेक्ट करती हुई पोइट्री थी. हमें तो हमेशा जो है वो उसको देख के वही ड्रामा याद आएगा या उस तरह की कुछ स्टोरीज याद आएंगी. वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि कहाँ पे जाके हम उसको रिलेट करें कि ये बांग्लादेश का जो एक हुआ था इंसिडेंट और उसके बाद बांग्लादेश हमारे से अलहदा हो गया था, ये उसके बैकड्रॉप में लिखा हुआ है. हाँ, अगर हमें कोई अब आपको मैंने एक रेफरेंस दिया है कि ये उस कॉन्टेक्स्ट में उस वक़्त इस पोइट्री को लिखा गया था, तो शायद अब हम जब इस गाने को दोबारा सुने तो फिर थोड़ा-सा हमारी विजुअलाइज़ेशन में वो चीज़ भी आ जाए. इज़ इट सो? Yes, ma'am. यस यस मैम. मैम. So this is how informalism, whoever launched it, who were the pioneer of this theory, they were of the view that whatever is the structure of the text, regardless of the writer or the poet, its constituent features, its form, its style, its structure is important, and it conveys a lot of meanings, and those meanings are not subjective, those meanings are objective. When we will study literature by using the lens of objectivity, its interpretation will be authentic and it will be reliable. अभी जैसे मैं आपको एक RM का रेफरेंस दे रही थी रिसर्च का, जो केमिस्ट्री की रिसर्च है, ऑब्वियसली वी कैन नॉट हैव द सेम kind of mindset and practical exposure in the study of in the research of social sciences. ठीक है, but what we can do at the moment, we can have at our best try to be unbiased and objective and fair in whatever we are conducting. अब यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि आपसे एक क्वेश्चन किया जाता है और उसमें आप कुछ एडजेक्टिव्स खुद से ऐड कर देते हो.
आपसे पूछा जाता है कि कितने बच्चे एब्सेंट हैं, आप कहते हो बहुत सारे। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आप बता दें कि 20 out of 37 आर एब्सेंट। विच वन इज मोर रिलायबल एंड ऑथेंटिक? The second one was. Obviously, where you at least, obviously 20 is a great number, और बहुत से कहना भी ठीक है, बट रिलायबिलिटी कहाँ पे है? जहाँ पे आप एक एग्जैक्ट अपनी तरफ से न्यूट्रल रिस्पॉन्स देते हो। तो जहन में रखिएगा कि स्टाइलिस्टिक्स इन इटसेल्फ इज नथिंग, बट it is a way, it is a kind of lens that try to find out fair and objective meanings on the basis of the language used in a text. And such kind of movements has been the part of literary study as well. And one of them was formalism. And then I was telling you about structuralism. What was in structuralism? It was basically this idea that there are certain things that have the same structure, and we can have different kind of linguistic experiments in that structure. For example, if we say that this is a lyric, so that the structure of lyric will be involving so many kind of different lyrics, but the structure will be the same. Likewise, if we say that a tragedy, a classical tragedy, has hamartia, has a kind of catharsis, and so if you have read about Yes, ma'am. Sophocles and Yes, ma'am. Aristotle's Yes, concept of ma'am. Yes, ma'am. tragedy, obviously that was a kind of structure. Well, then there were different writers who came up with the idea of tragedy. Means there were so many tragedies that were written by different authors. But the structure of that specific tragedy was giving us different kind of impression and expressions by different writers. जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो भी एक साइंटिफिक वे है। लाइक दे वर ऑल्सो ट्राइंग कि सिर्फ हम एक फॉर्म, ठीक है, हम उसका कंटेंट भी देखते हैं, फॉर्म भी देखते हैं, बट ऑन अ लार्जर लेवल we can categorize them into different structures, and in those structures we have a lot of experiments in form of different poetic works and different dramas and texts. But we can have the same constituent features in those structures. As I gave you the example of Oedipus Rex, likewise, if I give you the example of Faustus or any tragedy written by Shakespeare, somehow or other we can have the features of the structure of tragedy in them. ऐसे ही है ना, like Othello है तो वो एक tragedy है, और in a twist sense that is a tragedy. ऑब्वियसली वो उस तरह की ट्रेजेडी तो एज इट इज नहीं है जो इडिपस रेक्स वाली है, लेकिन ट्रेजेडी के स्ट्रक्चर पे तो फॉल कर रही है ना। Yes, Yes, ma'am. ma'am. So that was a school of thought about structuralism, and keep in mind structuralism की बेस पे we have also further progress in stylistics. अब वो किस तरह से है? फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने वो पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग। परसुएसिव राइटिंग है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग Yes, है, ma'am. नैरेटिव राइटिंग है। Yes, ma'am. ठीक है, अब नैरेटिव राइटिंग में कॉमन स्ट्रक्चर क्या है कि उसमें नैरेटिव में एक स्टोरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, इंसिडेंट्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, और इस तरह से हम उस तरह से वो एक राइटिंग होती है। लाइक अगर आपसे पूछा जाए मैं फर्स्ट डे इन स्कूल, और दूसरा आपको कहा जाए कि माय क्लासरूम, दोनों में डिफरेंस है या दोनों नैरेटिव है? नहीं, वन इज नैरेटिव, अदर इज डिस्क्रिप्टिव। क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आप चीज़ों की डिटेल देते हो, उनको डिस्क्राइब करते हो,
वो एक स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है राइटिंग का। जो माय फर्स्ट डे इन स्कूल है उसमें आप एक स्टोरी लाइक अपना एक फॉर्म जो है वो प्रोड्यूस करते हो, समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, you are just recalling it and you are writing in the form of a story. But when you are asked about to write your classroom, obviously you cannot write it in the form of a story because it does exist. It is a kind of object that has a unique feature, and that features are obviously in every other classrooms. We do have chairs, we do have tables, we do have lectrums, we do have teacher, we do have students. ऐसे ही है ना? But what is your first day of school would be obviously different from the experiment or experiences of the others. Likewise, if you find any persuasive writing, it would be different from the structure of narrative and descriptive. Like if I ask you to write a motivational essay on patriotism, or why patriotism is like oxygen in one's life, तो उसमें आपकी जो जस्टिफिकेशंस होंगी वो डिफरेंट होंगी, आपकी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होगा। तो स्ट्रक्चरलिज्म में ओवरऑल इस तरह के फीचर्स हैं। और हाउ इट इज कनेक्टेड टू स्टाइलिस्टिक्स, व्हेन आई विल गिव यू 4 to 5 texts and I will ask you to differentiate between them, there would be certain common features. On the basis of that, you will be able to identify what actually it is. So those common features in an umbrella term can be traced in different texts that are analyzed from stylistics perspective. मैं आपको एक न्यूज़पेपर का पेज दे दूं, फिर मैं आपको एक नॉवल का इंट्रोडक्टरी पेज दे दूं, फिर मैं आपको एक पोइम जो है वो दे दूं। अब ये तीनों डिफरेंट हैं तो ये रिटन मटेरियली, बट यू आर इजीली एबल टू differentiate between these three texts just because of the basis of the style or the way language is used in them, or the structure by which those things are written in form of that writing. Is it so? Yes, Yes, ma'am. ma'am. So you can see structuralism is also connected to stylistics, क्योंकि stylistics में भी when we say that there is a different style of writing in newspaper, there is a different style of writing in poetry, in drama and so, तो वो उनके स्ट्रक्चर्स की बेस पे कैटेगराइज हो जाते हैं, and we cannot hodgepodge or put them together. आई डोंट नो आपने ये फोरग्राउंडिंग और पैरेललिज्म और डिविएशंस इस तरह की चीजें पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी? Don't you have I any think idea? no, ma'am. Okay. Okay, do you have, I think so, when you will be given the assignments of literature, maybe some of the teacher have advised you to do its practical analysis or practical criticism on that text. ऐसा किसी ने दिया था काम? No, नहीं। आई थिंक हमने एक बार शायद लिटरेचर के ऊपर शायद शॉर्ट स्टोरी लिखने के लिए दी थी। ओके, क्लोज रीडिंग कभी कहा हो किसी ने? कभी क्लोज रीडिंग की हो? नो मैम।
ओके अब ऐसा है, क्लोज रीडिंग तो हमारे यही की है कि जब हमें किसी भी चीज के समराइजेशन के लिए बोला जाए तो फिर हम उसको डीपली एनालाइज कर लेते हैं, उसके अलावा तो कुछ नहीं। ओके नाउ द थिंग इज दैट के आपके पास अब ये 2-3 दिन है, यू विल बी स्टेइंग एट योर होम्स एंड ऑब्वियसली फ्रॉम मंडे वी विल बी ऑन कैंपस इंशाल्लाह। अभी तक तो यही है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आई विल बी शेयरिंग फ्यू टॉपिक्स विद यू, और आप में से ना यू यू हैव योर ग्रुप्स, ऐसे ही है आपके ग्रुप्स बने हुए हैं ना, एंड हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर दानिया? मैम आई थिंक 5 5 ग्रुप्स? यस मैम। आई थिंक 5 है या पता नहीं 6 है, कंफर्म नहीं है क्यों ओके आई विल बी वो गिविंग, क्लास के अकॉर्डिंग होता है। अगर कोई टीचर कहे कि आप लोगों ने जिस तरह बुक्स 5 पे से काम किया ज्यादा था बुक्स में काम किया था तो देयर वर 7 ग्रुप्स आई गेस, और 6? मैम आई थिंक 6 ग्रुप्स। ओके यू मस्ट वर्क इन दैट ग्रुप्स, ठीक है, वो आप लोगों का उसी पे चलो। मैं कुछ टॉपिक्स डिस्कस भेजूंगी ग्रुप में आपके आज शाम तक या सुबह तक। आप में से हर ग्रुप ने जो है वो एक चूज कर लेना, और यू आर टू गिव योर मिनी प्रेजेंटेशन ऑन दैट। अब वो 4 से 5 लोग जो है ना वो उस एक टॉपिक पे अपना जो है वो मटेरियल लाएंगे, बट कीप इन माइंड आई एम नॉट सेइंग कि आप उसको कॉपी पेस्ट करोगे। यू विल हैव अ थोरो स्टडी एंड यू विल इन easiest way will clear about those ideas, क्योंकि स्टाइलिस्टिक्स के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। तो आई वांट कि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है ना उसमें हम सिर्फ उन चीज़ों को कवर करें। ओके मैम। और आई विल ट्राई कि मैं कुछ मटेरियल शेयर कर दूं, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट मटेरियल यू जस्ट सम अप द आइडियाज ऑफ दैट कंटेंट। ओके मैम। ठीक है, तो वो फिर आपकी जो क्लास होगी उसमें आप लोग जो है वो प्रेजेंट करेंगे, और उसके बाद फिर हम फर्दर जो है वो इसकी तरफ आएंगे। गॉट इट? यस मैम। यस मैम। ओके एनीथिंग एल्स? नो मैम, बस अभी तक के लिए तो। चलें ठीक है। वैसे दिमागी तौर पे आप लोगों को कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।